All right, viewers, coming in live from Ayodhya, I have my colleague Priyanka. Priyanka, a very good morning to you. The Pran Pratishtha ceremonies happened. Prime Minister Narendra Modi addressed people and he said that this was very important. The Pran Pratishtha, return of Ram Lalla, was very important for the Viksit Bharat that we are looking at. Priyanka, please take us through the sentiments that are in the air and on ground in Ayodhya right now after the ceremony. Well, yes, Nikita, what we'll do for our viewers sitting at home is give them a sense of what it looks like to be in Ayodhya right now and what it looks like to be just 100 to 200 meters away from the temple. Right now, we are at the main gate and you can see that the number of people, the line does not stop. You can see the number of people who are chanting Jai Shri Ram. You can see the number of flags that are waving in the air. You can see the security that has also been deployed, the RAF personnel in a line that have been deployed. All of them, in fact, making sure that there's no untoward incidents because this is the first day, the first morning after Pran Pratishtha. What we're going to do is walk with the devotees to give our viewers a sense of what it feels like to be here right now and walk along with them as they go for their darshans because you can see that a lot of security arrangements have been done. In fact, it took us quite some time to get here ourselves, Nikita, because every place in the city, every route that leads up to the temple had been blocked because look at the number of people. The footfall of the people that is only increasing and in fact it was even more in the morning, which is why all the vehicular movement had come to an absolute halt. And now of course it has been allowed a little bit because the number of people who had gone inside and carried out their darshans have also been completed. And what essentially we are showing you is people in fact who have come from all parts of the country and they are in fact they are trying to go towards the temple, carrying out the darshan. Once again people are being stopped and that is being done on in a periodic fashion so that there's not too much of a crowd inside of the temple. And we will in fact we are also walking as we are going with the devotees and you can see the flags that are hoisted, the chants that echo this entire 1 kilometer walk towards the temple. And people in fact are also returning. There is a level of discipline that is being maintained by the police as well here. And we will try to catch up to them and try to speak to them. They're rushing a little bit because why not? This is in fact the first darshan that they will be able to do in the temple. Let's try to get in a word from people who are returning actually. They are the ones who are coming back. Let's try to understand how they are looking at the Ram temple, how they are in fact seeing the new Ram temple. आप अभी दर्शन करके आए? हाँ जी, दर्शन करने ही आए हैं और 500 साल की जो तपस्या, लोगों की कुर्बानियां, बलिदान इस राम मंदिर के लिए आज वो फलीभूत हो रहा है। कैसा दिख रहा है मंदिर? अभी कुछ ही घंटों पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई है, किस तरह से आप देख रही हैं? बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अब दर्शनार्थी आ पाएंगे, राम लला को देख पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। सालों की जो प्रतीक्षा थी वो जी, जो मेरे राम लला जी टेंट में विराजमान थे, जब हम आते थे तो टपकता था, आज मेरे राम जी को भवन मिल गया, बहुत भव्य मंदिर मिल गया, तो आज हम बहुत खुश हैं। दर्शन करने जा रहे हैं कि आप करके आ चुके हैं? अभी जा रहे हैं, ठीक है, चलिए। I mean, we're trying to move towards more of the people in fact who are going towards, but because there are people who had been waiting in lines for quite some time and they were the ones who are in fact who had in fact camped out. They had camped out in these particular spots. They had camped out to make sure that they are the first ones in, and that's who we're trying to get a word from. This is the path that leads towards the temple. You can see the number of people who are also returning. We'll try to get a word from them. We'll try to understand how they saw the मंदिर। दर्शन करके आया? सीताराम सीताराम, हाँ जी हाँ जी। कैसे दर्शन हुए? दर्शन बहुत भव्य है। राम लल्ला को देख के जो मन में शांति पहुंची है ना, ये हम ही जानते हैं। सुबह 4 बजे उठ गए थे हम लोग और हम लोगों ने 5 बजे स्नान किया। स्नान करके हम लोग दरवाजे पे आ गए थे। आपके कम से कम भी अगर लोग आए होंगे तो 40,000 लोग थे उस दरवाजे पे उस टाइम पे। 40,000? हाँ, हमें वहाँ से आने में आधे घंटे लगे, फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ दरवाजे पर रोक लिया
और रोकने के बाद जो है फिर धीरे धीरे करते करते फिर जब हम एग्जिट पॉइंट जैसे एंट्री पॉइंट पे पहुँचे हमें पता लगा फ़ोन मोबाइल ले जाना ही नहीं है। फिर हम दोबारा बाहर आए, फिर हमने लॉकर में जाके जमा कराया, फिर दोबारा लाइन पे करी, उसके दर्शन किए। ये क्या लेकर आए हैं? ये प्रतिमा है, अंदर से लेकर आया? हाँ जी। मतलब किस तरह से देखा, मंदिर देखा आपने, मंदिर किस तरह से दिख रहा है, राम लला को आपने देखा किस तरह? मंदिर बहुत अच्छी मूर्ति लगा रखी है, देख के मन खुश हो गया वहाँ जाके कि वो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, जो कोई नहीं कर सकता था ना वो काम किया उन्होंने। मंदिर में थोड़ा टाइम लेके आप बैठ कर आए कि रुकने का मौका मिला? कि रुकने का मौका नहीं मिल पाएगा आपको क्योंकि लोग श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और वहाँ पे जो पुलिस वगैरह वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है और एकदम से प्रेशर हो रहा है बिल्कुल बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों को एकदम से छोड़ रहे हैं और एकदम से बाहर कर रहे हैं। खुशी खुशी जा रहे हैं? हाँ, बहुत खुशी हुई सभी को। प्रभु श्री राम है, भाइयों केवट भैया कहाँ है, हमारे प्रभु श्री राम है। सभी को नमन। आप बताइए, आप क्या लेकर आए अंदर? माटी जी, राम जन्मभूमि की माटी लेके जा रहे हैं अपने। अंदर से मिट्टी उठा के लेकर? जी जी। अच्छा, दर्शन हो गए आप? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 2 बार के। 2 बार दर्शन कर लिया? जी जी। कैसा लगा पूरा अंदर? बहुत ज़्यादा बढ़िया और बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है अंदर भी। सजावट वगैरह जो हुई थी, कल जो हुई थी वो भी किए थे हमने, हम आज भी कर रहे हैं। कल भी हमें परमिशन थी मगर कल ज़्यादा धक्का मुक्की थी और आज उससे भी ज़्यादा है, मगर दर्शन बहुत बढ़िया हो रहे हैं। कल दर्शन हुआ था। मिट्टी का क्या करेंगे आप? ये सब घर पे अपने सभी लोगों को इससे माथे से लगवाएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए, थैंक यू सो मच। सो दिस इज एसेंशियली द मूड हियर, पीपल कमिंग बैक फ्रॉम देयर दर्शंस एंड दे आर आल्सो yes, there's another gentleman who wants to speak to us. बताइए। Hello, Jai Shri Ram. I'm from Chennai. I've come here for a week for a pilgrimage and have to visit nearby places like here, and also yesterday Pran Pratishtha happened but we could not make it. But somehow we'll try to want to make it today, so we just got... You're on your way to the darshan? No, I had darshan. I just had darshan. How was it? Yeah, it was so wonderful, but only thing, the crowd, it was to be arranged properly. They have to stop and... How long did you have to wait? We waited for almost 1.5 hours. So only the thing, the crowd has to be controlled. If that is controlled, then it's okay. Otherwise, it's good. Yeah. There were 1.5 hours of wait, and what are you trying to show us? Yeah, this is again Miti. So I'm taking to my hometown the sand inside the temple. So I just wanted to take it and give as a prasad. But this is the biggest prasad, which everyone wants to have it. Yeah. आप बताइए सर, आप दर्शन करके आए? जी, अभी दर्शन करके आया। मैं नेपाल से हूँ और हम लोग को बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। बहुत सारे लोगों को साथ में आए हैं। अभी रामलला का दर्शन करके एकदम हृदय प्रफुल्लित हो गया है। हम सभी को बोलना चाहेंगे कि सभी लोग थोड़ा बाद में ही सब लोग जरूर से आके दर्शन करें और बहुत दिव्य दर्शन है। Thank you. So this essentially are the mood. We'll try to speak to people who are heading inside because we see a level of excitement, a lot of excitement in the people who are going inside. These were of course conversations that we were getting of the people who were coming out after the darshan, but we will speak to the people who are on their way and are in fact they are speaking to us about how they are. आप किस तरह से अंदर जा रहे हैं? आप बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। पहली बार आया हूँ अयोध्या, भोपाल मंडीदीप से हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। भगवान श्री राम अपने घर में पधारे हैं। मैं पहली बार दर्शन करूँगा और मुझे इतनी खुशी हो रही कि मैं किन शब्दों से सरकार का और प्रशासन का धन्यवाद करूँ। राम लल्ला इतने सालों बाद विराजे हैं, प्राण प्रतिष्ठा बस कुछ ही घंटे पहले खत्म हुई है। मैडम वो तो है, ये हमारे लिए एक्चुअल न्यू ईयर है। 31 दिसंबर 1 जनवरी हमारा न्यू ईयर नहीं है। ये मेरा 47 इयर्स में आई कैन से दिस इज माय न्यू ईयर। आज से राम राज्य शुरू होगा। थैंक यू। This is their new year, this is their Diwali, this is their time. In fact, they are saying that they are excited to be here in Ayodhya, Nikita. That essentially is the sentiment. We are walking with the devotees who are going inside the temple. We'll try to go inside as well. But this essentially is the mood just a few meters away from the temple as people are walking in for their first darshan on the first morning after the Pran Pratishtha.